Hello everyone, welcome back to the Indian Traveler channel. Good morning from Sharjah, United Arab Emirates. अभी मैं खड़ा हूँ शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, as you all can see. And title say you all have guessed, we are flying today with Air India Express on its Boeing 737 Max. So let's शुरू करते हैं जर्नी. अभी बज रहे, it's almost 11:30 and we are gonna start our journey. Flight departs at 4. We arrived at airport little early, so let's get started. Because यहाँ पर अंदर एक अलग काउंटर होता है, आपको टिकट दिखा के फिर चेक इन काउंटर पे जाने देते हैं. So I don't think he will allow me to go because I'm way too early. So I'll show you how the airport looks from outside and also from inside, and we'll continue the whole vlog till we reach Mumbai, inshallah. So yeah, let's get started. So that is the departure area, and on the right side you will find this machine where you can just press for AED 5 and AED 10, and you can weight your how much your luggage is. So I already know my weight. I have one Zamzam, which when I was flying from Medina, and one bag, one luggage bag, and one handbag. This is how the current airport is looking. सो इफ यू आर फ्लाइंग फॉर फ्रॉम दिस एयरपोर्ट एंड आप फैमिली मेंबर को छोड़ना आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर खाने के लिए ओनली डंकिन डोनट्स एंड वी हैव सबवे हियर एंड आगे एक हडसन करके शॉप है दैट इज, बट उसमें टी और कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने, दैट यहाँ पर वेंडिंग मशीन है. यू कैन गेट कॉफ़ी, मिल्क, चॉकलेट मिल्क एंड एक्सप्रेस वॉट एवर यू वांट. सो अभी जाता हूँ मैं वहाँ से, विल गेट सम टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी एंड आई विल आल्सो शो यू हाउ इट लुक्स. एंड अभी भी चेक इन ओपन हुआ नहीं, वी जस्ट हैव टू वेट. सो या आई विल शो दैट वेंडिंग मशीन. सो ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये टी या कॉफ़ी का वेंडिंग मशीन है. ये लाइक लिटरली यू कैन गेट योर टी एंड कॉफ़ी इन 3 दिरहम्स. मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी मंगाई लाइक लिटरली 3 दिरहम्स में, एंड इट वाज सो चीप. अगर आप डंकिन डोनट या स्टारबक्स या और कोई जगह से खरीदने जाएंगे, सो इट विल इजीली कॉस्ट यू अराउंड 20 to 25 दिरहम. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हियर. एंड करेंटली वी आर हियर स्टैंडिंग इन द डी चेक इन काउंटर. चेक इन लाइन बहुत ही बढ़िया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे आगे भी इतने लोग खड़े हो गए, बट चेक इन प्रोसेस इतना स्मूथ हो रहा था. स्टाफ ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस इज सो कोऑपरेटिव दैट माय चेक इन जस्ट क्लियर गॉट क्लियर इन अ मिनट्स. एंड उसके बाद स्मार्ट गेट यूज करते हुए मैं निकल गया सीधा इमिग्रेशन से. लाइक लिटरली 10 सेकंड्स के अंदर इमिग्रेशन वॉज क्लियर. सो जब हम इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, उसके लिटरली 1 सेकंड बाद शारजा ड्यूटी फ्री आ जाती है. एंड ये बहुत स्मॉल ड्यूटी फ्री एरिया है बिकॉज शारजा एयरपोर्ट इज़ लिटरली कॉम्पैक्ट एंड वेरी स्मॉल, बट उसको अंदर से बनाया बहुत है. एंड अभी इसका रिनोवेशन का भी काम चल रहा था. इसको वेस्टर्न साइड पे और मतलब 2-3 एरो ब्रिजेस लगा है. सही है, प्रीटी कूल ड्यूटी फ्री. यहाँ पर आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. कमेंट्स में भी कितनी बार लोग पूछते हैं, 80% लोग ऐसे भी जनरली भी पूछते हैं कि भाई शारजा एयरपोर्ट का फूड कोर्ट कैसा है. तो सबसे पहले तो इसके बाद ख़त्म करने के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, इसके बाद आई विल शो यू द फूड कोर्ट अराउंड. Sharjah Airport food court, and we have McDonald's here, we have Big Balls here, Fusion Bites here. I mean, pretty cool restaurants. I mean, I'll show you from the back camera. The food area is pretty cool. There is small airport, so nothing to show, and it's currently 2:10. I was in the prayer room and slept. And यहाँ पर कैसा है कि prayer room जो है वॉशरूम के inside है कुछ जगह पे, तो कितनी बार आपको prayer room दिखेगा नहीं, तो you have to go inside the washroom and find the prayer room. I'll try to show you the prayer room. We have some tea here, and we have a sandwich here, vegetable sandwich of 10 dirhams. Yeah, I mean, मैं तो already dinner करके आया था, so मुझे इतनी भूख ना, just take a sandwich and tea. That's it, and still almost 55 to all 1 hour to go for the boarding. So yeah, and immigration was pretty smooth, just like 10-12 seconds. We just tap the passport, tap the boarding pass, and then the immigration was completed just in a while. So yeah, pretty good. Service in Sharjah airport is like literally well maintained, cleaned है, smell भी अच्छी आ रही है, perfume continuously like spray करें, and smell is also good. So yeah, and our flight is operated by Air India Express at sharp 4, inshallah, with 737 Max hai. So this is gonna be like technically my first time, because jo past time better those were like Boeing 737-900 ER, 800 and 700 version. So Max is like the first time, and we have heard a lot things about Max in the past aviation history, like few years back Lion Air ke साथ क्या हुआ था, and what happened in the United States, and allegations of the Boeing. So let's see how pretty and smooth the Max is. An announcement is going on. There a lot of pretty flights to Cairo I saw, and then and I opened the flight radar, I can see that Doha to Sharjah is the most famous route. So yeah, now let's see, and the registration of flight is VTBXS Victor Tango Bravo X-ray Sierra. Let's hope for a good flight, inshallah. सो दिस इज़ द स्मॉल फूड कोर्ट एरिया ऑफ शारजा एयरपोर्ट. यहाँ पर बर्गर किंग है, सबवे है, एंड यहाँ पर रेस्ट अदर लोकल ब्रांड्स भी अवेलेबल है. 3 दिरहम्स की तो कॉफ़ी आपको नहीं मिलेगी जो वेंडिंग मशीन में थी, बट ये. And here is the departure screen board. IX252 at 4 in the morning is hours to Mumbai. The Boeing 737 Max 8. एंड अभी मैं चलता हूँ गेट की तरफ, देख कर आता हूँ कि गेट ओपन हुआ नहीं हुआ. आई डोंट थिंक सो ओपन हुआ रहेगा.
एंड गेट की राइट साइड में यहाँ पर टिम हॉर्टन भी अवेलेबल है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर गेट के बाद सिक्योरिटी है, मतलब ये गेट है, यहाँ से आप एंट्री करोगे एंड देन यू हैव टू क्रॉस दी सिक्योरिटी चेक। एंड मैं आपको भी प्रेयर रूम भी बताता हूँ, दिस इज़ द प्रेयर रूम। एंड प्रेयर रूम सारे वॉशरूम के अंदर लोकेटेड है, तो आपको पहले वॉशरूम आना पड़ेगा, आधे लोग को तो मिल ही नहीं रहा, तो वॉशरूम आओगे उसके अंदर राइट साइड में छोटी सी जगह है, उसके अंदर प्रेयर रूम अवेलेबल है। सो ये आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज़ हाउ द प्रेयर रूम इज़ लुकिंग। अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बस बोर्डिंग ऑलवेज बेस्ट रहती है बिकॉज एयरक्राफ्ट और इंजन का भी बहुत ही क्लोजली मिलता है। फटाफट बोर्डिंग पास स्कैन करा। So currently I'm sitting in the aircraft now, right now, and it's a Boeing 737 Max, as I said, and it's a pretty good aircraft. Once the aircraft is in the sky, I'll show the interior seating capacity. They're adapted to how the magazine is. I'll try to order some food and show it to you all. So yeah, let's get started now. The refueling is currently going in the wings, and the boarding is also going. I was the almost like the first one to board, not exactly the first one, yeah, but at the first row. The sequence wise boarding नहीं हुई थी, like it was like जिसको जहाँ पे भी जाना है जैसे boarding करना है करो. So I'll show you the legroom now. Now this is how the legroom is. It's a very good legroom. Seat is currently reclined. Here is the big button, and here are the adapter, and this is the tray table. This is how, and this is the safety card, and this is the tray table. You can just press it, close it, and this is the view. Just look at this.
you guys can see a lovely sunrise view. Unfortunately मेरी सीट पे खाली सेफ्टी कार्ड और मैगजीन भी अवेलेबल थी ताकि मैं आपको कुछ दिखाऊं, और इसमें से कुछ मंगाना जैसा था भी नहीं. लाइक ब्रेकफास्ट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था. सो डायरेक्टली जंप करते हैं टू द डिसेंड इनटू मुंबई एंड लेट्स सी हाउ द लैंडिंग इनटू मुंबई गोज, बिकॉज आई थिंक इट इज गोना बी अ विंडी अप्रोच बिकॉज थोड़ा टर्बुलेंस ऑलरेडी फील हो रहा है अभी भी. शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठ रहें और आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि Hello everyone, good morning from Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. Currently we have completed our immigration and we will clear the customer will go out. So currently here is the baggage, but I'll collect the baggage and talk with you once I'll collect the baggage. Alright guys. So we are here in the Mumbai right now. Just look at this humidity. So I'll end this vlog here. Thank you for watching this vlog guys. Do like, share and subscribe and happy watching.